अस्सलाम वालेकुम। BSN फोर्थ सेमेस्टर। आज हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो KMU के हवाले से इंतहाई इम्पोर्टेंट MCQs है। तो स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ साइनोसाइटिस? तो राइट ऑप्शन है ए, फीवर। विच साइनोस आर मोस्ट कॉमनली इफेक्टेड बाय साइनोसाइटिस? तो राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, फ्रंटल, मैक्सिलरी, इथमॉइड। Which of the following is not a common cause of sinusitis? तो राइट ऑप्शन है हाई ब्लड प्रेशर। साइनोसाइटिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन से भी काज हो सकता है, एलर्जिक रिएक्शन, वायरल इन्फेक्शन से भी काज हो सकता है, लेकिन यहाँ नॉट की बात हो रही है। तो राइट ऑप्शन है डी। Which imaging technique is often used to diagnose sinusitis? तो राइट ऑप्शन है डी, CT scan. Chronic sinusitis is defined as sinusitis last longer than 3 months. साइनोसाइटिस इन्फेक्शन जब 3 महीनों से लंबा हो जाए तो उसको हम क्रोनिक साइनोसाइटिस कहते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट फॉर साइनोसाइटिस? तो राइट ऑप्शन है बी, नेजल इरिगेशन। नेजल इरिगेशन या नेजल लेवाज या नेजल या सलाइन नेजल इरिगेशन, जो नमकीन पानी के जरिए हम नाक को वॉश करते हैं। Which of the following is not a risk factor for sinusitis? तो राइट ऑप्शन है रेगुलर एक्सरसाइज। नॉट की बात हो रही है तो राइट ऑप्शन है डी। साइनोसाइटिस कैन cause which of the following complication? तो राइट ऑप्शन है ओटाइटिस मीडिया। Which of the following is a common bacterial cause of acute sinusitis? तो राइट ऑप्शन है ए, स्ट्रेप्टोकोकस pneumoniae. Which type of sinusitis is characterized by thick discolored nasal discharge? तो राइट ऑप्शन है ए, acute sinusitis. Which sinusitis symptom is most commonly associated with facial pain or pressure? तो राइट ऑप्शन है बी। वो कौन सा अलामत है जो चेहरे के दर्द से सबसे ज्यादा मुंसलिक है? तो वो है दांत का दर्द। Which of the following is not a typical symptom of sinusitis? नॉट की बात हो रही है तो यहाँ राइट ऑप्शन है ए, स्नीजिंग। Which age group is most commonly affected by sinusitis? तो राइट ऑप्शन है ए, चिल्ड्रन। Which of the following is primary goal of treating sinusitis? तो राइट ऑप्शन है all of the above, relieving symptom, preventing, identifying underlying cause. Which medication class is commonly prescribed to reduce nasal inflammation in sinusitis? तो राइट ऑप्शन है बी, antihistamines. Which of the following is a common allergen that can trigger sinusitis symptom? तो राइट ऑप्शन है all of the above, dust, pollen, feet dander. Which sinusitis symptom worsen when bending forward or lying down? So राइट ऑप्शन है बी, facial pain। वो कौन सा साइनोसाइटिस अलामत है जो झुकने या लेटने से ज्यादा हो जाती है? तो वो है फेशियल पेन। Which of the following statement about sinusitis is true? So right option is B, sinusitis can be a complication of the common cold. Which sinusitis complication can lead to vision problem if left untreated? अगर साइनोसाइटिस को वक्त पर ट्रीट ना किया जाए तो क्या हो सकता है? ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। ऑर्बिटल सेलुलाइटिस क्या है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू जिसमें आईलिड या आई सैकेट या लेक्रिमल ग्लैंड इन्फेक्ट हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग सर्जिकल ऑप्शन फॉर ट्रीटिंग क्रोनिक साइनोसाइटिस? तो राइट ऑप्शन है फंक्शनल एंडोस्कोपिक साइनोस सर्जरी। हम फेरेंजाइटिस को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ एक्यूट फेरेंजाइटिस? तो राइट ऑप्शन है बी, वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन की वजह से एक्यूट फेरेंजाइटिस हो सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वायरल फेरेंजाइटिस? तो राइट ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा वायरस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिम्टम ऑफ फेरेंजाइटिस? तो राइट ऑप्शन है सी, नेजल कंजेशन। सो फेरेंजाइटिस में कफ हो, खांसी, बुखार और गले खराब होना होता है, लेकिन नेजल कंजेशन नहीं होता। सो राइट ऑप्शन है नेजल कंजेशन, क्योंकि यहाँ नाट की बात हो रही है। स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस इज कॉमनली caused by which bacterium? So right option is Streptococcus pyogenes. Which diagnostic test is commonly used to confirm streptococcal pharyngitis? तो right option है B, throat culture. Chronic pharyngitis is defined as pharyngitis last longer than 1 month. अगर pharyngitis 1 महीने से ज्यादा हो जाए तो उसको हम क्रोनिक पेरेंजाइटिस कहते हैं। Which of the following is a potential complication of untreated streptococcal pharyngitis? So right option है all of the above. Which of the following is a common symptom of viral pharyngitis? तो right option है C,
swollen lymph node, जिसको हम lymph adenopathy भी कहते हैं, जिसमें lymph node enlarge हो जाते हैं ड्यू टू इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन की वजह से या कोई अदर डिजीज की वजह से। Which age group is most commonly affected by acute pharyngitis? तो right option है children and adolescents. Which of the following is a common viral pathogen causing pharyngitis in children? तो right option है C, RSV. Which condition can present with both pharyngitis and characteristic rash? तो राइट ऑप्शन है बी, स्कारलेट फीवर। ये ज्यादातर 5 से 15 साल के बच्चे इफेक्ट करते हैं। विच मेडिकेशन इज नॉट टाइपिकली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट पेरिंजाइटिस? तो राइट ऑप्शन है एंटीहिस्टामाइंस। यहाँ नॉट की बात हो रही है तो एंटीहिस्टामाइंस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉमन सिम्टम ऑफ एलर्जिक पेरिंजाइटिस? तो राइट ऑप्शन है डी, डिफिकल्टी स्वॉल्विंग। सिम्टम में इटची थ्रोट, स्नीजिंग, रेनी नोज होता है लेकिन खाने में कोई दुश्वारी नहीं होती। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइफस्टाइल फैक्टर कैन कंट्रीब्यूट टू क्रोनिक पेरिंजाइटिस? सो राइट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। Smoking, excessive alcohol consumption, environmental pollution. Which term refer to inflammation of both the pharynx and the tonsil? तो right option है tonsillitis। जब pharynx and tonsil दोनों में inflammation हो जाए तो उसको हम tonsillitis कहते हैं। Which type of pharyngitis is characterized by the presence of pus on the tonsil? So right option है bacterial pharyngitis। जब tonsil पर white patches मौजूद हो तो उसको हम bacterial pharyngitis कहते हैं। Which of the following condition is not typically associated with sore throat? So right option है B, sinusitis. Which of the following is a common complication of infectious mononucleosis? So right option है splenic rupture. कहते हैं splenic rupture is a medical condition where spleen rupture जिसकी वजह से internal bleeding हो जाती है। Which of the following statement about pharyngitis is true? So pharyngitis can be caused by both infectious and non-infectious factor. Which of the following is a non-pharmacological treatment for acute pharyngitis? So right option है B, salt water gargles। टॉन्सिलाइटिस को डिस्कस करेंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी काज ऑफ टॉन्सिलाइटिस? सो राइट ऑप्शन है सी, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। प्राइमरी काज टॉन्सिलाइटिस की बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। और विच वायरस कॉमनली एसोसिएटेड विद वायरल टॉन्सिलाइटिस? सो राइट ऑप्शन है EBV. Chronic tonsillitis is typically defined as recurrent tonsillitis occurring at least, so right option is C, 4 times a year. Chronic tonsillitis आमतौर पर बार बार होने वाले tonsillitis को कहा जाता है जो साल में कम से कम 4 बार होता है। Which of the following is a common bacterial cause of acute tonsillitis? So right option है Streptococcus pyogenes. What is the hallmark symptom of tonsillitis? So right option है sore throat. Hallmark symptom refer to the most characteristic typical symptom जो है sore throat. Which of the following is a typical sign of bacterial tonsillitis? So right option है white or yellow spots in the tonsils. Which diagnostic test is commonly performed to confirm bacterial tonsillitis? So right option है throat culture. Which age group is most commonly affected by acute tonsillitis? तो right option है B, children and adolescents. Which of the following is a potential complication of untreated bacterial tonsillitis? तो right option है rheumatic fever inflammatory disease, it affect the heart joints. अच्छा, which condition involve enlargement of the tonsil to the point of obstructing the airway during sleep? So right option है obstructive sleep apnea। वो कौन सा हालत है? So obstructive sleep apnea, sleep disorder where partial or complete obstruction of the upper airway during sleep which disturb sleep pattern. Which of the following is not a common symptom of tonsillitis? तो राइट ऑप्शन है wheezing, headache, swollen lymph node, difficulty swallowing। symptom है of tonsillitis की। What is the medical term for surgical removal of the tonsils? So right option है B, tonsillectomy. Which medication class is commonly prescribed to relieve pain associated with tonsillitis? So right option है B, antipyretics. Which of the following statement about chronic tonsillitis is true? So chronic tonsillitis can lead to persistent bed breath। इन्फ्लुएंजा को डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। इन्फ्लुएंजा इज काज्ड बाय वायरस। तो राइट ऑप्शन है बी। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस डेट इफेक्ट ह्यूमन बिलोंग्स टू विच फैमिली? सो राइट ऑप्शन है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सिम्टम ऑफ इन्फ्लुएंजा? So right option is C, sore throat. Which subtype of influenza were typically associated with seasonal flu outbreak in humans? So right option is B, H3N2. H3N2 is a subtype of the influenza A virus. Influenza vaccines are designed to provide immunity against both influenza A
and B virus. Which age group at the highest risk of developing severe complication from influenza? So right option A, D, elderly. Elderly age, also known as old age. Which of the following is not a common route of influenza transmission? So right option A, C, ingestion of contaminated food or water. ये डायरेक्ट कंटेक्ट इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से भी हो सकता है, एयरबोर्न ड्रॉपलेट से भी हो सकता है, यानी कप या स्नीजिंग की वजह से, टचिंग कंटामिनेटेड सरफेस की वजह से भी हो सकता है, लेकिन सी ऑप्शन यहाँ नॉट की बात हो रही है, तो right option is C. What is the incubation period for influenza? So right option is 1 to 3 days. Which of the following is a potential complication of influenza? So right option A, all of the above: pneumonia, encephalitis, myocarditis. Which antiviral medication is commonly used for the treatment of influenza? So right option A, oseltamivir. Which of the following is not typical symptom of influenza? So right option A, diarrhea. यहाँ not की बात हो रही है, तो diarrhea. The Spanish flu pandemic of 1918 was caused by which influenza subtype? So right option A, H1N1. Which population group is recommended to receive annual influenza vaccination? So right option A, all of the above: pregnant women, healthcare workers, young children. Which of the following measures can help prevent the spread of influenza? So right option A, all of the above. Which of the following measures can help prevent the spread of influenza? So right option A, all of the above: washing hand, covering mouth, avoiding close contact with sick. What is the typical duration of illness for uncomplicated influenza? So right option A, 3 to 5 days. Which of the following is symptom more commonly associated with influenza in children than in adults? So right option A, vomiting. Which of the following is a complication of severe influenza infection that involves inflammation of the heart muscle? So right option A, myocarditis. Which organization monitor and provide update on influenza activity worldwide? So right option A, World Health Organization, WHO. Which of the following statement about influenza is true? So right option A, C, influenza can cause pandemics when novel virus emerges. Which group of individual is at highest risk of severe complication from influenza and is therefore strongly recommended to receive vaccination? So right option is C, individuals with chronic medical condition. नमूनिया को डिस्कस करेंगे, so start करते हैं. What is pneumonia is primary and infection affecting which organ of the body? So right option A, B, lungs. Which of the following microorganism is a common cause of bacterial pneumonia? So right option A, B, Streptococcus pneumonia. Which of the following is not a typical symptom of pneumonia? यहाँ not की बात हो रही है, तो runny nose, जिसमें fever भी होता है, cough भी होता है with green sputum and shortness of breath होता है. Pneumonia can be categorized into different types based on etiology and location of infection. Which imaging technique is commonly used to diagnose pneumonia? So right option A, X-rays. Which age group at the highest risk for developing severe complication from pneumonia? So right option is D, old age. Community acquired pneumonia refer to pneumonia that is acquired. So right option is B, from the community or outside of healthcare setting. Community से हासिल होने वाले pneumonia से मुराद वो pneumonia है जो community या outside of healthcare setting से हासिल होती है. अच्छा, which of the following is a common symptom of atypical pneumonia? Atypical pneumonia is also known is walking pneumonia, is a type of lung infection caused by certain bacteria, viruses, or fungi. Which of the following condition is not risk factor for developing pneumonia? So right option A, regular exercise, smoking, COPD, immunity deficiency से हो सकता है, लेकिन यहाँ not की बात हो रही है, तो C. Hospital acquired pneumonia is defined as pneumonia that occur more than 72 hours after hospital admission. अस्पताल से होने वाला नमूनिया एक ऐसा नमूनिया है जो अस्पताल में दाखिल होने के 72 घंटे या इससे ज्यादा वक्त के बाद होता है. Which of the following is a common causative agent of wild pneumonia in infants and young children? So right option is B, RSV. Which vaccination is recommended to prevent pneumonia caused by Streptococcus pneumonia? So right option is C, pneumococcal vaccine. Which of the following is a common complication of severe pneumonia? So right option is septicemia. Septicemia, also
also known as sepsis, or blood passing, is a life-threatening condition that occur when bacteria, viruses, or fungi enter the bloodstream. Which laboratory test is used to identify the causative organism of pneumonia? The right option is blood culture. Which of the following is not a typical treatment for pneumonia? So right option is antifungal medication. इसके लिए हम एंटीबायोटिक, एंटीवायरल, एंटीपायरेटिक यूज करते हैं, फंगल यूज नहीं करते. Which of the following is a common symptom of aspiration pneumonia? So right option है foul smelling sputum. Foul smelling sputum, also known as fetid foul smell, due to the presence of bacteria, viruses, or fungi. Which population group is particularly vulnerable to aspiration pneumonia? So right option A B, elderly individuals with dysphagia, difficulty swallowing, change with eating and drinking. Which of the following statement about pneumonia is true? Pneumonia can be caused by a variety of microorganisms, including bacteria, viruses, and fungi. Which respiratory condition often precedes the development of pneumonia in susceptible individuals? So right option is COPD. Which of the following is a complication associated with severe pneumonia in children? So right option is C, acute respiratory distress syndrome. Acute respiratory distress syndrome, life-threatening medical condition characterized by inflammation to the lung and leading to impaired gas exchange and respiratory failure. Okay, thank you. मिलते हैं next video में. अल्लाह हाफिज.